नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर पुलिस ने राजस्थान से लाते हुए रुपए 35 लाख के एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। एसओजी को खानगी बात मिली कि राजस्थान से सूरत एमडी ड्रग्स लाते एक इसम उधना दरवाजे के पास आई हुई द ग्रैंड विला होटल रूम नंबर 704 में रुका है। यह बातमी के आधार पर छापा मारकर चेतन साहू नाम के इसम को गिरफ्तार किया गया है। चेतन साहू राजस्थान के उदयपुर का रहवासी है और उनके पास से पुलिस ने 354 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। साथ में 2 मोबाइल, 1 कार और 11,350 रुपए नकद मिलाकर कुल 44,75,000 का मुद्दामाल पुलिस ने जब्त किया। राजस्थान के चेतन साहू की पूछताछ के दौरान पता चला कि वह सूरत के अनीश खान लाकड़ावाला पठान और विकास शंकर भाई आहिर को देने वाला था। उस दौरान दोनों आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। राजस्थान के चेतन की पूछताछ में और बात मिली कि पहले महाराष्ट्र से सूरत एमडी ड्रग्स लाया गया था और सूरत पुलिस द्वारा ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि विकास आहिर सलाबतपुरा विस्तार में भवानी आइसक्रीम नाम की लारी चलाता है और आइसक्रीम पार्लर में ही ड्रग्स बेचने की बात सामने आई। आरोपी विकास आहिर भाजपा का कार्यकर्ता है। आरोपी विकास LLB सेकेंड ईयर में VT चौकसी कॉलेज में अभ्यास कर रहा है। सूरत पुलिस ने पिछले 1 महीने से यह इसमों को गिरफ्तार करने के लिए वॉच रखी थी। तीनों आरोपी राजस्थान से स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से ड्रग्स का ऑर्डर देते थे और राजस्थान से ड्रग्स सूरत लाया जाता था। सूरत में आइसक्रीम की लारी और पार्लर उपरांत आसपास के विस्तार में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में ग्राहकों को ड्रग्स पहुंचाया जाता था। आरोपी विकास, जिसका नाम भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सामने पहले 6 पुलिस स्टेशन में अलग अलग अपराध दर्ज हो चुके हैं। आरोपी अनीश पठान के सामने खटोदरा और अल्थान पुलिस स्टेशन में 3 अपराध दर्ज हो चुके हैं। आरोपी अनीश खान की पूछताछ के दौरान सामने आया कि वह 2017 से तालिब नाम के इसम का अपहरण किया और उसकी लाश को डुमस में फेंक दिया था। उस दौरान खटोदरा पुलिस स्टेशन में अपहरण और खून का अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस ने तमाम आरोपी को कार्रवाई करके आगे की जांच शुरू की है। गई काले तारीख 21 जुलाई रोज સુરત શહેર એસઓજી પોલીસ તરફથી એવા એક બાતમી આપણને મળી હતી કે રાજસ્થાનના એક વ્યક્તિ છે જો અહીંયા આવ્યા છે એમડી ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવા માટે। આ બાતમીના આધારે જો પોલીસે વોચમાંથી અને સલાબતપુરાના એક હોટલમાંથી આ વ્યક્તિ જેના નામ છે ચેતન કુમાર સાહુ, જેના 22 વર્ષ ઉંમર છે, એના જો 354 ગ્રામ એમડી સાથે એની ધરપકડ કરી છે અને આ વ્યક્તિ પાસેથી જો એના વાહનો, મોબાઈલ ફોન આ બધા રિકવર કરવામાં આવેલા। પછી ફર્ધર જો એના પૂરા જો લિંક હતા આ અહીંયા આવીને જો બીજા 2 મેન અહીંયાના જો પેડલર છે આ પેડલરોને આપવાના હતા, જેમાં એક અનીસ કરીને નામ છે, અનીસ ખાન ઉર્ફે અન્નુ લખડવાલા, આ ભાટિયાના વિસ્તારમાં રહે છે અને આ પણ જો આ પ્રકારના પ્રવૃત્તિમાં અગાઉ 6 મહિના પહેલે બી NDPSના પેડલિંગ કેસમાં પકડાયા હતા। આ બી એક ગુનેગાર વ્યક્તિ જેના પર 3-4 ગુનાઓ દાખલ થયા છે, મર્ડરના બી ગુના એના પર દાખલ થયા છે, એક આ સામેલ હતા અને બીજા એક આરોપી છે જેના નામ છે વિકાસ આહિર। આ બી એના ઉપર બી અહીંયાના હિસ્ટ્રી સીટર અને ક્રિમિનલ વ્યક્તિ છે અને 6 જેટલા ગુનાઓ એના ઉપર બી દાખલ થયેલા છે। જો આ બંનેને બી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કુલ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સાથોસાથ બીજા એના જો 7 આરોપીએ બીજા ક્યાંથી और કોણ કોણ સાથે સંકળાયેલા છે એના ઉપર તપાસ ચાલુ છે। વિગત એવું છે કે આ વ્યક્તિ જ્યારથી આપણા सूरत शहर पुलिस ने जो पहले मुंबई थी जो ड्रग पेडलिंग धंधो थता था एना ऊपर जो कार्रवाईओ थई, आ कार्रवाई ने लीधे अत्यारे आ लोको जो राजस्थान रस्ता पकड़ा है जो है राजस्थान वाया तरफ थी जो पूछपरछ में जानवा मळेल छे कि त्यांथी के रूट पर कोई डाउट नहीं करे ए माटे जो त्यांथी आ लोको जो आ रूट पकड़ीने लई आवता हता पछी पकड़ाया छे અને વધારે પૂછપરછ में એવું જાણવા મળે कि आ विकास आहिर અને आ जो अनीश छे આ લોકો અહીંયા જો પાર્લર જો આઈસ્ક્રીમના પાર્લર વગેરે ચલાવે છે, 5-6 પાર્લરો છે। આ પાર્લર ઉપરથી આ લોકો अपने ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે એમડી ડ્રગ્સ અને સાથોસાથ અમુક જગ્યા આ લોકો એના જો ગ્રાહકો છે એના 2 વ્હીલરમાં બી જઈને અલગ અલગ જગ્યાએ આપતા રહે છે। લેકિન મુખ્યત્વે એવું જાણવા મળે છે કે જો પાનના પાર્લરો છે, આઈસ્ક્રીમના પાર્લર છે, ત્યાંથી अपने ગ્રાહકોને આ લોકો સપ્લાય करता करे छे। जो है देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।